तो इन्क्रिमेंट कितें बी ते कोणाक आजून काय खबर ना सगळ्यांक खबर आहे यांची हिस्ट्री काढली ना सगळ्यांनी भायरसून कितें कितें आसा ते इन्क्रिमेंट दिनात 1% 2% बी इन्क्रिमेंट करतात कोर्टान डस्ट कोणे 1-2% इन्क्रिमेंट करतले इन्सेंटीव बी येतात अजूनच दिना in that tune and with that action, they all are very upset. They are saying first you have to apologize to Sanjay Naik. That is what they are saying. So there is no harm. Because see, if you have hurt them, then it is our duty that we have to apologize to him. So I think that we should. I don't know what is the technical point, what they are telling. So तुम लोग का जो continuity है वो that is getting affected because if they start working it will be totally new with monologue. Totally new. So that entire thing सार क्या मतलब so उन लोग का फर्क हो रहा है बोल रहा है बाकी का उन लोग का कहना यही है कि वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो अडानी का कंपनी है जिस तरह से JSW ने लोगों को पेरोल पे लिया था spoiling the decorum of the meeting correct मीटिंग में था you told to issue a letter warning letter to both of us someone else also last time have said ghanta and everything all those abusing things in meeting we did not complain also but that you are also noticing leave it sir I am leaving up to you you are the boss you have to take a decision सर को बुला के अभी ये डिस्कस करने ये का discuss- go and convince मेरे को कोई दिक्कत how नहीं we है can go to so how I Gautam can Adani? go and convince I will go and write जहाँ पे as it is sir sir said- अभी क्या हो रहा है रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है मेरे 7 ऑन रोल लोग इज नाउ कमिंग टू मोनोमार्क तो अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझे दोगे मैं नहीं दूंगा सैलरी तो ये देंगे तो जो भी कमर्शियल रिलेटेड बात है दैट्स व्हाई आई गेट देम बिकॉज HR पॉलिसी इनका रोल आउट होगा मेरे से जो था वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया इनका 2 पॉइंट था विच वी ऑलरेडी एड्रेस उसके बाद ये फ्लेयर अप होगी मेरे से जो इनका था आई स्पोक टू देम इनका मेन ग्रेचुइटी था एंड जो PL और जो लीव्स का था विच आई स्पोक एंड देन मोर और लेस इट वाज सेटल्ड बट जब व्हेन ही केम एंड टोल्ड अबाउट हिज पॉलिसी जो कि अगले 5 साल तक रोल आउट होगा देन सडनली देयर वाज समथिंग सम हार्ड वन एंड ठीक है चलो नाउ ही इज अपोलोजाइज टू संजय so now blaming Seagreen that is the problem blaming it संजय नहीं चलो ठीक है he apologized no that is okay it was not a blame it was not a blame I was also there Adani also I'm he did not but then जब मैं निकल गया I was told 2 o'clock तभी मेरे को पता चला कि स्ट्राइक हो गया then I came back no मैं आया ना वापस ते सगळे आमचे कितें कितें कमिटमेंट आसलो ते आमी तांकां बरोवन दिले देखून तेणी थोडे अग्री जालो आनी थोडे पूण तेन्ना अदानी कशें आसलें केक कापता आमकां घेवन घेवन वो भी पूछा एक रीजन कापी क्या है आसता 5 साल का सर इसको कॉन्ट्रैक्ट देकर हम लोग बोले अच्छा कंपनी है 5 साल का 5 साल की साल इसको बंद क्यों किया गया रीजन क्या है उससे आपको पळय करया फाल्यां सगळे तुमी फाल्यां सगळे मातशे आयज एक सडनली म्हाका कॉल येयलो आनी हे जे तुमी पळयता सगळे जाण ते आमचे अडानी कंपनी आसा आनी अडानीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो तेंचो पार्टनर म्हणटा ते सी ग्रीन म्हणून आसा आनी सी ग्रीन कंपनीच्या अंडर हे सगळे जाण काम करता हे आतांसून काम करना गेली कितलीशी 15-20 वर्सां जाले हे काम करता आनी इतली वर्सां ते काम करीत आसा एवरी टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चेंज जायत रावता आनी हे सी ग्रीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सांचो आसलेलो सडनली 3-3.5 वर्सां जाली आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट मदींच काडला आनी कोण तरी दुसरी कंपनी हाडला दिसता सो तेज्या लागून सडनली हांकां इन्फॉर्मेशन केलें सो हेंच्यांनी म्हटलें कितें बाबा आमकां जे टर्म चेंज करतले तुमी त्या प्रमाणे आमची जी फॅसिलिटी जी कंपनी कडसून मेळटा ती सगळी आमची परत चेंज जातली सो ते एग्री जायनाले सो ते कितें म्हणटा कितें आमकां अडानी कंपनीन ऑन रोल घेवचे म्हणजे परमनंट स्टाफ म्हणून घेवचो जे अडानीचो जो हेड आसा हांगलो संदीप रॉय तोवूय हांगा येयलेलो तेजे कडेन हांव उलयलां ती न्यू कंपनी कोण येयला तेजो कोण मनीस येयलेलो तेजे कडेन आमचें उलोवप जालां ते म्हणटा कितें आमकां ती न्यू कंपनी कडेन आमकां कांय लेना देना ना आमकां जें लागता तो सी ग्रीन लागता आनी अडानी लागता सो हेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा कितें बाबा अडानीन आमकां पे रोलाचो घेवचो कित्याक ते म्हणटा कितें लास्ट टायमी आमकां सी ग्रीनाच्या अंडर जेन्ना घातले कॉन्ट्रॅक्टाच्या तेन्ना आमकां खुबशे एश्युरन्स दिल्लेले आनी ती एश्युरन्स दिवन आयज पर्यंत ती आमची पूर्ण करूं ना कंप्लीट करूं ना सो ते कितें म्हणटा फाल्यां ताका दिले फाल्यां हेच जातलें फाल्यां 2 वर्सांनी ताका चेंज करतले आनी कोणाक हाडटले आनी हांगले हेड म्हणटा कितें आमच्या हातीन कांय ना कितें आसा तें डिसिजन अहमदाबाद ऑफिसानसून जाता म्हणटा सो ते म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय ना सो लोकांनी सगळ्या वर्कर्सांनी म्हाका दिसता सद्या जे ऑपरेशन आसा अडानीचें तें स्टॉप केल्लेलें आसा सद्या बंद दवरलेलें आसा हांव तांकां सगळ्यांक विचारतलो बाबा फुडलो स्टेप तुमचो कितें ते म्हणटा कितें आमचो डिमांड आसा कितें आमकां ऑन रोल घेवचो म्हणून सो तो तेंचो डिमांड आसा आनी अडानीकूय आमी संदीप रॉयकूय सांगलेलें आसा जो तेंचो इन्चार्ज आसा हेड आसा कितें तांकां ऑन रोलचे तुजे कंपनी कडेन तुमी उलया म्हणून आनी बाकीचे जे आसा ते सगळे एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा ते डिमांड बट खंय तरी
दिसता कितें ते फक्त टायमींग हय म्हणटले बट फाल्यां फटींगपणां करतले आनी हांकां दिसता जी न्यू कंपनी येयला नांव कितें तेजें मोनोमार्क म्हणून ती तो मनीसूच जो कोण आयज येयलेलो तो व्हेरी एग्रेसीव आसलेलो खंय फाल्यां सकाळी ते म्हणटा कितें तेजो जर जॉयंट जायनासतना फस्टूच तेका आमच्या बरोबर हो जर वेव्हार आसा तेजो जाल्यार फुडें आनी तो आमचे कडेन कसो वेव्हार करतलो सो ही वील बी व्हेरी एरोगंट म्हणटा ते सो आमकां तेज्या वांगडा काम करपाचेंच ना सो तेंचो डिमांड आसा एक तर आमकां पे रोलाचेर घ्या नाजाल्यार आसा ती सी ग्रीन वांगडा आमची कंटिन्यू करचें सारकें मरे सो हेजेच वांगडा कंटिन्यू करचें म्हणून हे तेंच्यांचो डिमांड आसा सो फुडले डिसिजन ते आपल्या सगळ्या वर्कर्सां कडेन उलयतलो हांवें तांकां कित्याक चडांत चड जे लोक हांगा आसा ते सगळे आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा आमचे सड्या वयले जेटी वयले बायणा बोगदा सगळे एरियेचे लोक आसा तेजे लागून जेन्ना म्हाका कळ हो इशू जाला म्हणून हांव तांकां सपोर्टाक हांगा येयलेलो आसा आनी हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिलेलें आसा हांव फुल्ली तेंच्या बरोबर आसतलो आनी तांकां सपोर्ट करतलो हो इशू तेंचो सॉर्ट आउट करून दिवपाक लागून दिला बरोवन कितें आहा तें आतां वर्कर आमचे खूब जाण हांगा सर ऑलमोस्ट 80% वर्कर हांगा सडा वास्को जेटी हेच रेजिडंट्स हांगा सगळे ताका लागून संघ चोऱ्यो येयला हांगासर तेंचे इश्यूज मेन कितें आहा ते आमचे लेटर 2021 पॉयंट्स आहा ते फाटले जाले मेन तेंचो मेन पॉयंट आहा की तुमच्या कडेन आतां 15 वर्सां जालीं काम करता तुमी आमकां डायरेक्ट अंडर कंपनी कित्याक घेयना हो वर्करांचो क्वेश्चन आहा सो अंडर कंपनी कित्याक घेयना तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी दिवंक ना ती पॉलिसी ना म्हणटा आतां तेजेर डिस्कशन फुडें जातलें पूण वर्कर्साचो स्टँड तो आहा की आमकां अंडर कंपनी घ्या ऑन रोल घ्या सारकें मरे तुमच्या कडेन सो समज घेयना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडें घेयना जाल्यार फुडें डिस्कस करतले कित्याक जायना कित्याक कन्क्लुजन तुमीच सांगा म्हणून तेंचे कडेन ना जाल्यार हें अशें कंटिन्यू आसतलें आयज हँडलिंग बंद केलें तुमी फूल आयज बंद जाला आयज सगळ्या वर्करांनी बंद केलं फाल्यां चालू आसतलें आतां हें बंद आसतलें आतां कितें डिसिजन जातलो तेंचेर तुमकां मागीर सांगूंक शकता केन्ना चालू जातलें केन्ना पूण हेचेर बेगीनचो बेगीन अदानी ऑफिसरांनी आपलो डिसिजन दिवचो इस कंपनी में करीबन 14-15 साल से काम कर रहा है और हर बार एक नया ठेकेदार बार लेके आते हैं ये लोग और हर 5 साल में 6 साल में चला जाता है वो और हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा ग्रेजुएटिव ये मिलेगा 10 अलाउंस मिलेगा ऐसा कुछ मिलता नहीं है हम लोगों को काम करने के बाद ओवर टाइम भी देते नहीं ये लोग सिर्फ एश्योरेंस देता है और बोल के चला जाता है बस एक बार बिजनेस साइड आया वो बिजनेस साइड चला गया दूसरा गया ये रिपीट होता रहता है यहाँ पे बस और अभी नया कॉन्ट्रैक्टर लाया है उसका आदमी बहुत रफ एरोगेंट बात करने का उसको वो नहीं है इसलिए हम लोगों को शायद जम नहीं रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर हमको अच्छा नहीं लग रहा है कितना स्टाफ है और अभी हमारा 200 प्लस स्टाफ है अभी आणि